which is a fundraising platform. And basically, it's being supported by WHH. We at ETI Services are also working with the teams. And before we begin the webinar officially, I'd like to just tell everyone that we will be recording this just for your permission. Before we start, a little bit of background on, of course, the fact that India remains completely stratified on the lines of gender, class. There are lots of vulnerable populations, and COVID-19 recently has shown us the impact on exactly those populations. There is a lack of access. There is a concept of have and have nots. And again, recent 2.5 years have shown us how unequal the society really is. Why are we here today? We are here today because the power of people, the power of giving matters. When people come together, jab log saath mein milte hain, and the webinar will be a mix of English and Hindi today, because we'll be speaking also to some very powerful path-breaking innovations that are on field, which are being supported by this platform. The platform basically is an institutionalized crowdfunding platform where we can come together as individuals, companies to really donate to some groundbreaking work that's going on. And we will hear about those examples. So I urge you to stay with us through the webinar. If there are any questions, please leave them in the Q&A box. If you have a speaker in mind, once we start, please mention the name and I'll make sure the questions are asked. Let's jump in and let me turn to the panelists. Let me introduce them very quickly. We are joined by Mr. Sai Krishna Nanduri, who is the CEO of National Skills Foundation of India. He recently also participated in and contributed to the formulation of the seminal policy of Government of India on doubling farmers' income by 2022. आज हमारे साथ दिलीप कुमार दुबे जी हैं, who has founded Prava in Jharkhand in 1992, being inspired by prominent social scientists Ram Manohar Lohia and Jai Prakash Narayan. Today, Prava reaches out to more than 100,000 families through its interventions on sustainable livelihood, natural resource management, women empowerment, and multiple other issues. Ms. Pooja Bhati is a management professional portraying young women's leadership from India in the social sector. In 2011, after joining the Tarun Bharat Sangh, a non-government organization working on women, water, and river issues, she began her development journey. Welcome, Pooja. We are also joined by Ms. Parmeshwar Bava, who is the senior output editor and correspondent at NDTV. She also anchors their news bulletin. Previously, she spearheaded research for NDTV's primetime shows such as NDTV Dialogues and Left, Right, and Center, and worked as the core team of Countdown 2019 and Reality Check. Ms. Muskan Raina is a UI UX designer and a social media influencer. She holds an experience ranging from exploring traditional art to conducting design, doodle workshops at universities, and transitioning into a role that blends art and psychology together. She is also passionate about development issues, particularly nutrition and gender rights. Last but not the least, Ms. Narjis Hussain, who is an award-winning writer, researcher, and journalist. She has worked with the Hindustan Times Group Hindi for 7 years at News Feature, and Value Edition. She has also worked as a senior researcher in Rajya Sabha TV. Welcoming you all, and the format we are going to follow is going to be informal. I'm going to pose some questions to the panel, but before we get into that, I'd like all of us to hear from Mr. Sai Krishna about the platform, because I think today's conversation is about this platform and how we can come together as citizens to really make a difference to the lives that are left behind, to the lives that are ignored. Sai, over to you, please. Yeah, thank you very much, Sukriti. Very good afternoon to everyone. You have set the tone perfectly well, Sukriti, and we are living in a time where we have haves and have-nots. We have, there is always a discussion in the society about India having multiple dimensions. People living in poverty, but also we have the most richest individuals in the entire world.
So way back in I think 2017, when Veltunga Hilfi and a few other partners who are doing commendable work in the society in terms of creating developmental impact, it was strongly felt. Then there was no COVID, frankly. But human development indicators in the country are quite diverse and varied. So we always have a lot of debates, but facts are facts. And there is a downward spiral in the institutional funding reaching out to the communities, while government is making very, very commendable work in terms of developing the society and taking up several measures, but everybody has got their own limitations. So we all work in a world of limited resources. So in this context, when the institutional funds reaching out to the development organizations is experiencing a downward spiral, it was felt that we should stand by the great institutions and sort of promote and support their interventions in the rural areas. While we have several crowdfunding platforms already in the marketplace, we felt in addition to the focus on few individuals who must be facing a lot of difficulties, we also need to take proactive action. We also need to look at sustainability. We also need to take those measures which are not immediate, not disaster as on date, but certainly if they are not addressed, they will face disasters maybe in the coming decades, or maybe in this generation or the next. So Sharon as a platform was set up with the European Union Fund, and Veltunga Hilfi has also contributed to these funds. And it's basically a sort of fundraising and digital inclusion platform where it is for the not-for-profits and also by the not-for-profits. That is the uniqueness of the platform. And this particular platform empowers a lot of civil society organizations and also supports corporates and family foundations to sort of streamline their resources into developmental impact. And broadly, we have been working in the Sharon platform. We have been working in three areas. One is to sort of support the civil society organizations in being financially viable or maybe sustaining their operations, because they are doing a fantastic work there on the ground. Now they have to live today to be able to continue the good work that they are doing eternally. So developing their models, their impact models, their income generation models and supporting them is one of the goal that this particular program has set itself with. And also we, under the platform, we have been supporting more than 60 civil society organizations in their sort of communication tools, digital and social media marketing, and sort of basically to promote their developmental impact across different community and the social societies segments, such that responsible citizens do contribute to their work. So this is the kind of work that we are doing. Basically, sum and substance is that we are for institutional impact, and we at Sharon have been supporting a lot of civil society organizations and so that they can continue their good work and sort of be there with the communities when they are in need. That's in essence, Sukriti. Thank you very much. Thank you, Sai. I think that sets the tone for the conversation because, like I started, I think today's conversation is about the issues that we face, but also the fact that Sharon is a possible solution where, at the ease at your home or in your office, you can really come together to support some brilliant ideas. There are close to 10 campaigns. I just want to tell the audience that have kindly joined us. I know it's a weekend, so thank you once again. But everybody who's here, the campaigns are online and really interesting ideas that are functioning. And I just want to turn now to Dilip ji. Dilip ji, namaste. Thank you for joining. मैं बस आपसे ये जानना चाहती थी कि प्रवाह जो आपने शुरू किया वो किस चीज़ से प्रेरित होके शुरू किया, एक तो ये सवाल है मेरा। और दूसरा जो हिस्सा है सवाल का वो है कि ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए, जैसे शेरॉन एक प्लेटफॉर्म है, हमारी टीम्स आपसे मिल चुकी हैं, आपकी टीम से मिल चुकी हैं, द कैंपेन्स जो हम चला रहे हैं, तो ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए शेरॉन जैसा अगर प्लेटफॉर्म है तो वो
क्यों, उसकी क्या भूमिका है, वो क्यों जरूरी है? दिलीप जी, जी ओवर टू यू। जी, सभी को नमस्कार। मैं दिलीप हूँ और पिछले 30 वर्षों से हम सामाजिक क्षेत्र में, खास करके एनजीओ के सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने थोड़ा सोशल एक्टिविस्ट के रूप में हमने काम शुरू किया था, जो 1974 के मूवमेंट से हम अपना जीवन की शुरुआत किए थे सोशल सेक्टर में। और फिर एक दशक से ज्यादा समय तक हमने एक गांव में रह करके जो लोगों की समस्याएं थी, खास करके बाउंडेड लेवल का प्रॉब्लम था, फिर लैंड का डिस्प्यूट था, इन सारे इशू को इकट्ठा करके लोगों के बीच में ले गया। लोगों के द्वारा ही इसकी लड़ाई लड़ी गई। हमारा शुरू से ये मानना रहा है कि जिसकी लड़ाई उसका नेतृत्व। हम उसकी लड़ाई के अगुवाई करने की स्थिति में तो थे, लेकिन हम चाहते थे कि ये लड़ाई खुद ये लड़े, जिनकी हर ये लड़ाई है। तो उस दिशा में हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया। काफी हद तक हम लोगों को सफलता भी मिली। एक उस वक्त हम लोग यंग थे, यंग की स्थिति में हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। बाद में कुछ लाइबिलिटी हम लोग के ऊपर आई, तो साथियों की राय हुई कि एक एनजीओ का गठन किया जाए। तो 1992 में आकर के हमने एक प्रवाह नाम से एनजीओ का संगठन खड़ा किया। और उस वक्त में जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को रचना और संघर्ष दोनों लगभग हम लोगों का साथ चल रहा था। आज की स्थिति नहीं थी उस वक्त में कि अगर आप संघर्ष में जाते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, ये सब समस्याएं नहीं थी। वो साथ साथ हम लोग कर रहे थे। लेकिन बाद में हम लोगों ने एक कंसल्टेंट किया कि अब जिस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं और जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, उसको एक कमिटमेंट के साथ हम काम करेंगे। और उस दिशा में हम लोगों ने प्रयास करने का कोशिश किया है। और खास करके जब हम शुरू किए थे 1992 की स्थिति के समय में, तो झारखंड के इलाके में एजुकेशन की बहुत बड़ी समस्याएं, बहुत सारा गैप था। मात्र 12-13% साक्षरता दर था। महिलाओं में तो 4 से 5% साक्षरता। तो उन लोगों के बीच में एजुकेशन का काम प्रारंभ किया। एजुकेशन के काम करने के बाद हम लोगों को लगा कि कुछ समस्याएं आ रही है उन लोगों के साथ में, जिससे हम लोग चाहते थे कि बच्चे स्कूल में आए और पढ़ाएं। तो कभी कभी ये कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो उनके गार्जियन से मिलते थे कि क्यों आपके बच्चे नहीं आ रहे। तो वो खेत के में हम चले जाते हैं काम करने के लिए, तो हमारे बच्चे घर का काम देखते हैं या फिर बकरी वगैरह चराने के लिए जंगल चले जाते हैं, वहां से कुछ करके आते हैं, चराते, समय नहीं मिलता। तो हमको लगा कि इन लोगों के सामने लाइवलीहुड की बहुत बड़ी समस्याएं है। और संथाल परगना, खास करके हम झारखंड के संथाल परगना में देश, तो यहाँ देखते थे कुल जमीन का मात्र 15 से 20% जमीन यूज होता था और 80% जमीन जो है वो यूज नहीं होता था, वो यूजलेस था, उसमें किसी प्रकार की संसाधन नहीं होता। फिर बंजर भूमि का एक सर्वे करके उसका हम लोगों ने संघर्ष किया, सरकार से डिमांड भी किया। इसका एक टाइम बाउंड प्लानिंग आप कीजिए कि ये हमारी जमीन है, हम इसका मालगुजारी देते ही है, टैक्स देते हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार की सुविधाएं आपके द्वारा नहीं दी जा रही है। कुछ इरिगेशन की फैसिलिटी उपलब्ध हो जाए, कुछ सीड वगैरह उपलब्ध हो जाए, तो फिर ये लोग काम कर सकते हैं। और वो जमीन काफी फर्टाइल है, नो डाउट वो फर्टाइल नहीं है, इसलिए तो कहा जाता है बंजर भूमि, लेकिन वो बंजर नहीं था, फर्टाइल। फिर उस दिशा में हम लोगों ने लाइवलीहुड के दिशा में काम करने का प्रयास किया, तो काफी हद तक सफलता भी मिली है। और आज पूरे झारखंड में अगर आप देखें तो अब लगभग 60% लैंड जो है यूज हो रहा है। एक फसल ही हो लेकिन यूज हो रहा है। कहीं कहीं जहाँ संसाधन हो चुका है पानी का, वहाँ पे 2 फसल 3 फसल मिल लेते हैं। कोई क्लस्टर, वेजिटेबल का क्लस्टर बना के बेचते हैं। तो इस तरह से लाइवलीहुड के दिशा में हमारी संस्था ने काफी प्रयास किया है। और आज लगभग हमारे पास में 10,000 से ऊपर जो गांव है जहां हम लोग काम करते हैं, बिहार, बंगाल और झारखंड के, जो झारखंड, बंगाल और बिहार 3 डिस्ट्रिक्ट में, 3 स्टेट में, और बंगाल में 2 डिस्ट्रिक्ट में डेयरी का काम करते हैं, एक हुगली, एक बर्धमान। काफी ह्यूज मात्रा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लाइवलीहुड के सेक्टर में काम करें। इस समस्याएं अभी जो ये आ रही है कि बहुत सारा हमारे पास में फंड का प्रॉब्लम होता है, फंडिंग उस ढंग के नहीं है, या अगर आप जो करना चाह रहे हैं CSR का फंड है, तो CSR का अपना एक नॉर्म्स होता है। एक तो ये है कि हमारा जो फैक्ट्री का कैचमेंट एरिया है उसी इलाके में काम करें। दूसरा है कि उसका एक लिमिटेशन है कि हमारा ये इसी दिशा में आप काम कर सकते हैं। हम अगर कोई प्रपोजल देते हैं कि इस एरिया के लिए ये ज्यादा अच्छा होगा,
लेकिन न्यूट्रिशन बच्चे की संख्या ज्यादा है, न्यूट्रिशन पर फोकस करना चाहिए। तो कहेगा नहीं इसमें यहाँ एग्रीकल्चर का यहाँ स्किल डेवलपमेंट का, तो वो जो है अपना एजेंडा CSR लागू करता है। तो फ्रीडम नहीं होता है काम करने का। हम जो सोचते हैं लोगों के जन समस्याओं को दूर करने का, वो नहीं कर पाते हैं। फॉरेन फंडिंग की समस्या तो बहुत ही खराब हो गई है, बहुत सारे फंडिंग अब रहा नहीं हम लोगों के साथ में चले गए, और इस ढंग से परेशानी भी, लीगल कंप्लायंस इतने हैं कि उसमें परेशानी भी बहुत झेलनी पड़ती है। तरह तरह का संशोधन, इनकम टैक्स वगैरह, FCRA, ये सारा जो कंप्लायंस आते रहते हैं, वो सबसे भी बहुत परेशानी होती है। तो एक शेयर ऑन के बारे में हमारा ये कहना है, शेयर ऑन एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल हम लोग करने का प्रयास कर भी रहे हैं, कुछ किए भी हैं। शेयर ऑन को थोड़ा सा मजबूत करने की जरूरत है। अभी लोग शेयर ऑन को उस ढंग से जानते नहीं, और जब तक लोग जानेंगे नहीं तब तक डोनेट नहीं करते हैं। इसलिए इसको कैसे हम स्ट्रेंथ कर सकते हैं, कैसे इसको मजबूत कर सकते हैं, इसका कैसे हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लोगों के बीच में हम अपने मुद्दों को कैसे ले जा सकते हैं, इस दिशा में हम लोगों को कोई कार्यक्रम बना करके काम करने की जरूरत है। और इसमें अगर हम लोग काम करते हैं, शेयर ऑन को लाई से बहुत सारे प्लेटफॉर्म, क्राउड फंडिंग के प्लेटफॉर्म, वो फंड तो दिलाते हैं लेकिन कमीशन लेते हैं। तो हमारे लिए कोई अगर 10 रुपया दिया तो उसमें से 4 रुपया 5 रुपया उसी के पास रह जाता है। तो हमारा जो प्लानिंग होता है 10 रुपये का, वो हम 6 रुपये में 5 रुपये में आकर के सीमेंट करना पड़ता है। तो शेयर ऑन तो कम से कम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे बीच में, जो भी मिल रहा है वो हमको मिल रहा है, सीधे वो ग्रास रूट पर जा रहा है, जिसके लिए हम मांग रहे हैं उसके लिए जा रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है, और अभी हमको लगता है कि इसकी बहुत ही जरूरत है, बहुत नीड है इसकी। अगर इसके बगैर आप सोशल सेक्टर में सर्वाइव करना मुश्किल हमको दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग तो ग्रास रूट में है, काम कर रहे हैं, एक सर्टेन गांव में काम करते हैं, 10 गांव 20 गांव को हम एक क्लस्टर बनाते हैं, वहाँ काम करते हैं। काम करते हैं तो होता है कि हमको लाइवलीहुड का काम करना है, तो वहाँ एजुकेशन भी जरूरत है। एजुकेशन कर रहे हैं तो वहाँ एजुकेशन का भी कहीं कहीं जरूरत होता है। कुछ ऐसे बच्चे आ जाते हैं जिसको एजुकेशन की बहुत जरूरी है, लेकिन उसके घर वाले उसके लिए तैयार नहीं है, या उनके पास में कुछ ढंग की नहीं है, तैयारी नहीं है। तो उसको हम चाहते हैं कि कुछ हमारी ओर से उनको मदद हो जाए, उनके बच्चे भी पढ़ें, तो उसको हम कुछ सपोर्ट करें। तो इसलिए हम लोगों ने एक स्कूल भी बनाया था, गुरबाग का अपना एक स्कूल बिल्डिंग भी है, और अपने ही रिसोर्सेज से हम लोग कुछ टीचर को रखे हुए हैं जिसको 4000 5000 रुपया सपोर्ट करते हैं, और उसी से पढ़ाई करवा रहे हैं। जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं या जो बच्चे स्कूल जा भी रहे हैं, उनकी इच्छा होती है कि नहीं आपके स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, हम भी आ जाते हैं, उन लोगों को भी हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो उसको कुछ अगर हम लोग सपोर्ट कुछ किताब वगैरह का देना चाहते हैं तो वो नहीं दे पाते, तो जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो पढ़ाने वाले टीचर है उसी को, वही तो हमारे पास में रिसोर्सेस नहीं है, फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं इधर उधर से उसको सपोर्ट करते हैं। तो उसको सपोर्ट की जरूरत होती है, उसके लिए हमने एक कैंपेन भी, बुधिया वाला कैंपेन भी चलाया था, कुछ पैसे भी हमारे पास आए थे, और उनसे हम लोगों ने कुछ बच्चों का ड्रेस भी दिया, कुछ किताब भी दिया है, स्कूल का तो में थोड़ा पेंटिंग वगैरह भी करवाया है। तो ये एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी हमारे लिए दिखाई पड़ता है शेयर का। इसको कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, ये हम सब लोगों के लिए चैलेंजेज है, और उस चैलेंज को हम लोगों को स्वीकार करते हुए इसको मजबूत करने की जरूरत है। और आज का नीड है शेयर ऑन को जैसे प्लेटफॉर्म को मजबूत करना और उससे अर्न करना, क्योंकि अब उस ढंग का फंडिंग रहा नहीं, जिस ढंग के फंडिंग सोचते हैं कि मिलते आ रहा था, वो नहीं मिल रहा है। अब फंडिंग का स्रोत भी घटा है, और एक मात्र उपाय यही है, कुछ लोग डोनेट भी करना चाहते हैं। हमारे कुछ मित्र हैं शेयर ऑन में ही हम लोग कैंपेन किए, तो वो हमको व्यक्तिगत डोनेट करते हैं, मुझे नहीं आप शेयर ऑन को दीजिए, शेयर ऑन से ही हमको मिलेगा, तो हमको व्यक्तिगत आप देने का कोशिश नहीं कीजिए। तो इस तरह से हम सब लोगों को प्रयास करने की जरूरत है कि हमारा जो व्यक्तिगत संबंध जिनके साथ में है, और वो सक्षम लोग हैं, कुछ डोनेट करना चाहते हैं, भाई आप शेयर ऑन को दीजिए, शेयर ऑन हमको देगा, तो एक लगे कि हाँ हमारे पास भी शेयर ऑन का भी ग्रोथ हो रहा है। तो इस ढंग से हमको आगे काम करने की जरूरत है। और जितनी हाँ जी बोलिए दिलीप जी। जितनी समझ हमको थी उस हिसाब से हमने अपनी बात रखी। आप सब लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। और मैं आपके पास वापस लौटूंगी, एक और सवाल है मेरा, थोड़ी देर में आपसे फिर से बात करेंगे। बट आप ही के कंधे हैं जो आई थिंक इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, जो सबसे बड़े इश्यूज हैं ग्रास रूट में, आप ही जैसे लीडर्स हैं
तो शेयर ऑन जैसे प्लेटफॉर्म्स तो हमारे छोटा सा एक अटेम्प्ट है आपको सपोर्ट करने का, तो आप जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है, इसीलिए आज हम मिल रहे हैं और जी। जिन लोगों से बात कर रहे हैं, और इसके बाद हम फिर मिलेंगे एंड वी विल मेक श्योर कि हम इसे एड्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। Parmeshwar, before I turn to Sai about how to address the challenges, I think it will be very interesting to understand your take on relationship of gender and caste specifically to development, because a lot of the issues at the grassroots that Sharon is wanting to help address are related very closely to some of these aspects. And how do you believe that certain populations are at a disadvantage? Please go ahead. Parmeshwar, you're on mute. Sorry. Yeah. Sorry, I apologize for that. No problem. Go ahead. Thank you so much, Sukriti. I just want to first acknowledge the fact that both gender and caste play a significant role. And in the city and in the buzz of the city life, usually people tend to forget, in like amid the veil of privilege, that the concept of caste doesn't really exist. Parmeshwar, one Because second. it may not One come through second. as evidently in the One city. second. Parmeshwar, 1 second. But this is where work like Dilip said. Hi, can you hear me? Parmeshwar. I can hear you. There's a little bit of an echo on your phone. Can you shut your video because there's a lag and your voice is getting missed? I can hear you, but it's patchy now. Okay, go ahead, please. Doing that. Just a second. You can switch your video off. It will just help the Is it better voice. now? Better. Go ahead. Okay, I think she'll join back. So we'll let Parmeshwar join us back. Sai, I'm going to turn to you till she comes back. So we started with the concept of have and have nots, and really, India that's developed, India that's developing, India that's backward. There are lots of segments here. So how can Sharon as a fundraising platform really address these gaps? I know we spoke about it briefly, but if you'd like to go in detail or maybe mention one or two campaigns that you think are helping people, and what does Sharon really bring to the table? Yeah, sure, Sukriti. See, let us talk about few facts. See, in the current world, I think between 2020 and 2021, more than 23 crore Indians have actually got pushed themselves into the poverty. And around the same number, this is as per Ajim Premji's recent report of 2021. State of working report, and by the recent state of environment report published by CSC, we see that it is reported that about the same number, about 20 to 23 crore of Indian rupees are malnourished. Be it as it may, these are the numbers that one can certainly ignore. And if you have seen the recent COVID times, between 55 to 65% of men and women who have come back to their native places because of COVID haven't moved back. So there is a huge population out there in the rural areas which actually have a lot of aspiring people who earn their living and sort of do good for the families are not able to go back. So there is a huge gap. On one front, if you see, Sukriti, people say India and Bharat are different, and we have haves and have-nots. And but I see it as a very at a Sharon as a team, we see it as a great opportunity, frankly. While not having the essentials of a decent living, be it education, health, or maybe the nutrition, is not certainly encouraging. But we also have those haves in our country where they can contribute. They are the part of the same society, and they really appreciate and understand, can empathize with
what is out there in the communities who are vulnerable. So Sharon is sort of making several attempts to bridge this particular gap. While we have people who doesn't have the basic means of their education, health, and nutrition, on the other hand, we have some of the members who are aspiring, who have come up the curve, who can also give back to the society and their own communities and vulnerable communities to make things happen. And this is where Sharon is trying to make a difference. And so we have been, as a team, have been supporting a lot of civil society organizations in the basic use of, like as Dilip ji was mentioning, out there we have several community organizations who are doing excellent work. However, we always have the difference between rural and urban people in terms of somebody having soft skills and somebody not having soft skills but doing commendable work. So Sharon is attempting to sort of bring those civil society organizations up the curve in terms of helping them use the latest communication tools, art of storytelling, content writing, social media marketing, digital marketing of their campaigns, and the kind of impact that they are creating out there in the most needy areas, and also managing the public relations. So the Sharon is not just about supporting the soft skills, but also the team is continuously handholding these civil society organizations in the governance structures, their compliance structures, legalities, because we see that in the current context, the compliances that the area of compliances is completely changing, and this requires a lot of support to the community organizations, and that's where Sharon is pitching in and supporting these organizations so that they can keep up their good work, and so that they can resonate with those people who are out there, who are having sufficient resources, who intend to make a difference in the society they're living in, but certainly to cater to the requirements of the vulnerable communities. And that's where we are trying to make a small change in the world. Yeah. Thank you. Small changes can often lead to, the results that Dilip ji, Pooja ji जो काम कर रहे हैं. So thank you so much, Sai. And I think our attempt through these conversations is to let people know that there is a platform, because I know, we've got this audience on a Saturday afternoon, and I know a lot of them also have smallish organizations and startups. So I think, having that support behind you is very important. साई, थैंक्स फॉर दैट. पूजा जी, बिफोर मैं परमेश्वर जी के पास जाऊं, आपसे मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि साई ने बताया शेरॉन प्लेटफॉर्म के बारे में, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि शेरॉन के साथ आपका अनुभव अभी तक कैसा रहा है. मैं जानती हूँ हमारी टीम्स आपके साथ काम भी कर रही हैं, और अपने कैंपेन्स के बारे में अगर आप कोई एग्जाम्पल्स देना चाहें ताकि हम ऑडियंस को समझा सकें कि किस प्रकार का यूनिक काम हो रहा है. जैसे साई ने बोला, बहुत इम्पोर्टेंट काम हो रहा है एट द ग्रास रूट्स. पूजा जी, थोड़ा सा बताइए. जी. So, Sukriti, we are having a wonderful experience working with Sharon. And the reasons that make the journey so wonderful is the team. They're very cooperative, very supportive. They help you with the content, with the photographs. They're always a call away. And then the platform. It's very user-friendly, not only for the donors, but for the campaigners as well. And last but not the least, complete transparency. So when they say no charges are deducted, they mean it, like there are no hidden charges. And talking about our campaigns, TBS has a few campaigns running on Sharon platform. And these are, one is Happy Mothers campaign that includes providing nutrition kit to pregnant women and lactating mothers. Then there's a Gifter Goat, providing goat to landless farmers. So basically during COVID, बहुत सारे लोग थे जो शहरों की तरफ चले गए थे. So when they came back during COVID, तो because वो सब कुछ अपने सारे खेत बेच के गए थे, so they did not have any means of earning. So this campaign has been really fruitful for them. And then there is one campaign on water management that helps create water bodies. Okay, thank you so much, Pooja.
And I think we'll talk about the campaigns a little bit more. And just to let the audience know, we have the share on links, which will be shared by the team on the chat box. Just look at the links, go to the campaigns. There is, like I said, there is some very unique path-breaking work that's happening. And please, we look forward to the support. I'm going to request the team to share the links in the chat so that people can access that. Parameshwar, can you hear me? Yes, I can. Am I clear? Yes, you're clear now. So just turning back to you before we take a poll question to engage with the audience, your thoughts on really the relationship between caste, gender, and issues related to development, and how do you believe, you've reported in the times of COVID, you've been reporting for a number of years, how are some populations more vulnerable than the others? Honestly, first of all, in the city, there seems to be this generic veil over the idea that caste is actually not a concept that very many people need to associate with because it's regressive. But just because it's regressive doesn't mean it doesn't exist. It exists beyond the metropolitan cities, and the metropolitan cities are the 1% of our country. So when we look at when we look at these statistics, it's actually tragic. Out of 146 countries, India is actually placed at 135 in the Global Gender Gap Report. And what's concerning is also the fact that in India, the general perception seems to be the binary, male and female. This also leaves the other minorities like transgender persons out of the ambit, which is also a sort of concern because they on their own have their own struggles and matters and campaigns that they might feel they need to rally for. When you talk about caste, I feel that there is a lot that we need to do in terms of our coverage as well, so as to highlight the problems that different people are facing. It could be North India, South India, the West, East. But the fact is that we also need inputs from the ground in order to make this process seamless. So when it comes to the fact that you're raising these digital campaigns, it would also be great if you're using the digital space to actually alert, let's say, a reporter or a journalist you ardently follow, or you follow their updates. It would be great if you could just reach out to them with a one-liner saying that this is a problem that we are facing in this location. These are the resources, or these are the problems, 1, 2, 3, so that we can step in and at least give you the coverage that you totally deserve and that the issue demands. So I feel in this point, it's a bit of a symbiotic relationship where we also require help from the ground. It doesn't matter whether you're in the network of the TV. If you have an issue that you feel you need to raise, with the power of social media, with the power of the digital space, we are in a position that we can do so. Okay, so I also, thanks for that, Parmeshwar, and I do think and I agree with you that media, social media, and that's why I'm so happy that Muskan, you are here, because I think media has a very important role to play, not only in promotion of but just letting people know that there are platforms, and Sharon is one very important example that it is there. You want to help, please come forward, use these platforms, and please help to address these important issues. So I'll be looking forward, and I hope that you'll share this in your networks, that media is the fourth pillar of the democracy, and I think plays a very important role when it comes to really sharing that there is an opportunity, like Sai said. The challenges are big, but the opportunity is also there to help. Before we move to the next section, to the audience that's so patient and is there, there's going to be a poll question that we are going to put up on the screen, and just take a few seconds, and this is for everyone, audience, panelists, to respond to, and we'll see the results while the question's coming up. Can I request the team to please put up the first poll question? There it is. What do you believe is the biggest challenge for development in India? Number 1, lack of financial resources. Number 2, social culture barriers. Number 3, technological backwardness. Number 4, lack of employment opportunities.
Please go ahead and vote. And I'll give you a few seconds before we jump into the next stage of the conversation. Thanks to the audience again for staying patient, joining us. I can see some questions pop up, and we'll take that towards the end. Requesting the team to put up the results once they are there. And in the interest of time, I'm going to actually now move to the next section, which focuses on what we started with, the power of giving, the share on platform, the power of coming together for change. Muskan, I'm going to start with you because we ended the last session with Parmeshwar. Oh, there it is. So all of us, or most of us, feel that it's social cultural barriers, but I can see financial resources comes a close second. Thank you everyone who voted, and we will be back with the second poll question to break us between the second and the third session. So Muskan, just turning to you because we closed with Parmeshwar and the power of media. So, as somebody who uses the digital space for change, how do you think social media can be utilized to build spaces and encourage audiences to donate to platforms like Sharon? Over to you, Muskan. So hello everyone. It's been great here. And then what I want to highlight here is the power of people, right? The art of giving comes when after we realize that there's a social network that we can leverage on. There are people who want to contribute towards the society, who want to make an impact towards the society, but they don't know how. And there are organizations working towards the movement. Now we need to bridge that gap. How do we do that? It's through these social scenarios where we get the network and then we direct people. See, here you want to contribute, you want to make an impact in the society through these issues. Could be education, could be poverty, could be nutrition, could be gender balance, multiple issues that we look at. But how do we bridge that? How do we broadcast it and then tell our people that these are the issues that need to be highlighted and focused upon? So that is where I think social media plays the role, and that is where I feel share on plays the role. So for example, I have an example for the second wave of COVID, where we did not have resources, where whatever background you were from, wherever you are, did not make a difference. People did not have meals, so we had a bigger battle to fight while we were in that condition. We had a bigger battle to fight when we had COVID, but there were this basic need also that was limiting, so that we couldn't arrange for meals. And then there are other people also. So imagine if I couldn't arrange for meals, there are classes or there are segments that did not know how to go about it, that did not have the basic need of having a shelter or having their meals covered, let alone fighting the COVID battle. So what I did was I started a fundraiser, and then I told everyone in that group. So I thought that maybe I have some sort of social reach where I can tell people that maybe we can impact if we collectively move towards this. If we collectively say that this is an issue that we identify, which is people are not getting meals in COVID, so maybe we can collectively involve here, build a network, and then ensure that nobody sleeps hungry. So after I did that, I created a fundraiser, and in a span of just 4 days I was able to collect 2.5 lakhs. This was the first time I did that, when I realized that there are so many people who want to create an impact, they just don't know how. I realized that platforms like Share On come in, where you want to create an impact, but it's just behind that click. And how do we broadcast it is through social media. When I realized that this is the social network that we're looking at, where we can actually make an impact towards the greater good, I connected the restaurants to the people. So there was an umbrella player who was delivering free food to all the people, and there were 3 4 fallback options in case that does not happen. And that time we ensured that there are some chains running in Ghaziabad, some in Delhi, some in Noida, everywhere around Delhi NCR, and we were able to build a massive network from one person trying to do their bit for two people trying to do their bit for 10 other people. So this is how we build onto that network. And this is where I realized that platforms like Sharon are a great way to actually help broadcast and then highlight issues that need to be there, that need to be communicated towards the public to create an impact towards.
Muskan, first of all, congratulations. I love the example of 1 to 2, 2 to 10, 10 to 50. I think so. Congrats on that. We all have been following your work. And I think, as the Sharon team, we are very lucky to have you support us. And looking forward to working with you. Like you said, I think the answer that we are seeking is how to get it to people, because people want to give, they just don't know how to do it. So I think with conversations like this and the follow ups, I hope we can reach more of India. Thanks again. Nargis, you've been very patient, but because we are talking of COVID-19 and Muskan's work related to really bringing people together, the power of people, I want to actually turn to you and ask you a question on, do you think India has the culture of giving and sharing for impact? And how can power of giving contribute to the health sector? There are some campaigns we are running which are closely related to the health issues on the Share On platform. You are a health reporter. I just want your opinion on this. The culture of giving, is it there? Is it not there? Do we need to do better? First of all, thank you so much for inviting me in this webinar. Yes, Sukriti, that is very true. This is in very much is in culture of, especially if I am talking about India, it is really very much there. लेकिन और इसका recent example अभी जो recently pandemic हुआ है उसमें हमको देखने को मिलता है कि haves और haves nots के बीच जो डिफरेंस था उसको किस तरह लोगों ने अपने अपने लेवल पे आकर के लोगों को हेल्प किया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत थोड़ी मदद कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने लोगों को नॉट इवन गिविंग फूड, उनको और भी तरह की मदद करी है, चाहे वो हॉस्पिटल ढूंढने में हो, चाहे वो ऑक्सीजन, स्पेशली सेकेंड वेव के बाद जो कोविड की सेकेंड वेव थी उसमें बेड के लिए अगर मदद करनी हो या आपको ऑक्सीजन के लिए करनी हो, हॉस्पिटल के लिए हो, टेली जो मेडिसिन सप्लाई का आई मीन डिलीवरी का है वो देना हो, या डॉक्टर से भी आपको कंसल्टेंसी लेनी है। इनफैक्ट मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अगर लेटर डेज में तो मेंटल हेल्थ की भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा राइज किए थे। तो वो सारी चीज़ों में जो भी जिस भी तरह से एक दूसरे की हेल्प कर पा रहा था और सपोर्ट कर पा रहा था वो सब लोगों ने किया। किसी ने भी ये इस चीज़ का वेट नहीं किया कि गवर्नमेंट आएगी या कोई ऑर्गेनाइजेशन आएगा। तो मुझे लगता है कि जब हम एज एन इंडिविजुअल इस तरह की हेल्प कर सकते हैं तो वाई ओनली इन क्राइसिस। इस क्राइसिस के अलावा भी इतना बड़ा क्राइसिस आने से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी पहले से ही की हुई तैयारी से। क्योंकि जैसे मैंने बहुत सारी फेलोशिप्स में बहुत सारी डिजीजेस को कवर किया, बीट एनीमिया और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, इवन मेंटल हेल्थ। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ हम लोगों की जो गिविंग वाली जो चीज़ है, शेयरिंग वाली जो चीज़ है, ये क्राइसिस में ही अब काम करती है, विच इज़ नॉट डन। जैसे मैंने यूपी के बहुत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में काम किया, तो मुझे ये जो सिनेरियो मुझे 2001 में दिखता था उससे कुछ थोड़ा सा बेहतर मुझे अब दिखता है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि वहाँ पे अच्छा हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं है। ये सिर्फ एक पेंडेमिक के लिए थैंक यू तो कहना बहुत बहुत ही नेगेटिव होगा लेकिन ये एक हेल्थ इमरजेंसी भी थी जी। और इसमें हेल्थ एकदम पब्लिक डोमेन में आ गया। हर इंसान जो है वो अब हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गया है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि वो ओवर कॉन्शियस हो गया है। उसके लिए अवेयरनेस नहीं है, उसके लिए उसके पास इंफॉर्मेशन बहुत कम है। ये बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जिस पर बाद में बहुत डिटेल में बात की जा सकती है। लेकिन जो पावर ऑफ शेयरिंग की आप बात कर रही हैं वो पावर ऑफ शेयरिंग है, लेकिन वाई इन ओनली इन क्राइसिस, ओनली इन पेंडेमिक? क्या हम ये शेयरिंग के लिए, ये गिविंग के लिए हम क्या एक और क्राइसिस का वेट करें? नहीं, इसके लिए हमें अभी कम से कम ये एक जो लेटेस्ट पेंडेमिक हुआ है ये हमारे लिए आई ओपनर होना चाहिए। और हमें
कोई भी डिजीज हो, कोई भी नॉन कम्युनिकेबल हो, कम्युनिकेबल हो, उन सब के लिए हमको मुझे लगता है कि जो जितना दे सकता है, जितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, जितना हेल्प कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने लेवल पे कर रही है। सपोज मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ, जैसे हियर इन दिल्ली बहुत सारी मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज है जो 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 नॉर्मल इंसान को, एक सिटीजन को, दिल्ली के रेजिडेंट को फ्री मिलती है मेडिकल फैसिलिटी। लेकिन यहाँ से आप थोड़ी सी किलोमीटर्स दूर जाएंगे तो वहाँ वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। दिल्ली में फ्री भी है और पेबल भी है, आप पे करके भी ले सकते हैं, वो फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं और फ्री भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये दिल्ली में है तो बाकी और जगहों पर ये अवेलेबल क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो वहाँ क्या हम सिविल सोसाइटी, एनजीओ या इस तरह के प्लेटफॉर्म से क्या वो हम इनिशिएटिव नहीं ले सकते? वो बिल्कुल कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करके थ्रू फंड्स, थ्रू ग्रांट्स, थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम, वो हम, और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि अवेयरनेस, पर्टिकुलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्थ केयर सेक्टर, प्रिवेंशन पे हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए। प्रिवेंशन होगा तो बाद की जो स्टेज है, टर्शरी जो स्टेज है, वो कम होगी कंपैरेटिवली। लेकिन अभी अगर मैं डेटा की बात करूं तो बी इट ट्यूबरक्लोसिस, एनीमिया, आप एनएफएचएस के डेटा देख लीजिए, आप और अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अलग अलग मल्टीनेशनल, आई मीन इंटरनेशनल एनजीओज के देख लीजिए आप अगर डेटा, तो मुझे लगता नहीं है कि ये डिजीजेस जो हैं ये कम होती हैं, फिर कुछ टाइम के बाद एक्सक्लेरेट कर जाती हैं, फिर बट वो पूरी तरह से वो जा नहीं पा रहा। हम कई बार कई डिजीजेस को लेकर हम लगातार मिस करते जा रहे हैं डेडलाइंस। तो मुझे ये पर्सनली, मुझे ये बहुत ज्यादा फील होता है कि अब हेल्थ को क्राइसिस मान ही लेना चाहिए और वेट नहीं करना चाहिए, इस पर अभी ही एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। थैंक Thank you so much, Nargis. And why only in a crisis? And I think जो जैसे आज हम शेरॉन के प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, वी फोकस ऑन इश्यूज। जो आप कैंपेन्स देखेंगी, जो आपने देखे हैं, वो लॉन्ग टर्म असिस्टेंस के लिए हैं। एंड आई कंप्लीटली एग्री विद यू, एंड इट्स अ ग्रेट टेक अवे मैसेज फॉर द ऑडियंस। सिर्फ हेल्थ ही नहीं है जिस पे प्रायोरिटी देनी है, एजुकेशन भी है। दिलीप जी, मेरी आवाज आ रही है? आप म्यूट पे हैं दिलीप जी। अनम्यूट कर लीजिए दिलीप जी। हाँ जी। जी। हाँ जी, तो जैसे नरजिस ने अभी हेल्थ की बात की, मेरे ख्याल से एजुकेशन भी एक सब्जेक्ट है जो प्रायोरिटी है, मैं जानती हूँ, और मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैंपेन है प्रभा का रिलेटेड टू एजुकेशन। दिलीप जी, थोड़ा मैं आपसे जानना चाहती थी कि आप उन बच्चों के लिए स्कूल चला रहे हैं, आपने थोड़ा सा हमसे बात की थी पिछले सवाल में स्कूल के बारे में, जिनको उचित शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। तो शेरॉन जैसे प्लेटफॉर्म्स की पहुंच को कैसे बढ़ाया जा सकता है और कैसे मदद की जा सकती है? एक तो शेरॉन हमको मदद कर रहा है कि कुछ हमने एक केस स्टडी दिया था जिसको उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर डाला था, और उससे कुछ हमको प्राप्त भी हुआ था। जी। और इस ढंग का कैंपेन को के लिए और हम कई जगह से बातचीत भी कर रहे हैं कि कुछ सपोर्ट मिल जाए, ताकि उसमें जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो सारे बच्चे काफी निम्न वर्ग के हैं, जिनके माँ बाप को पढ़ाई के प्रति रुचि नहीं है, उनके पास में पैसे का बहुत अभाव है, वो स्कूल भी नहीं जा सकती है। तो हम लोगों ने इसीलिए स्कूल के टाइम से थोड़ा विरोध रखा कि जब आपकी को फुर्सत मिले उसी समय आप हमारे स्कूल में आइए, वही 4 घंटा आप पढ़ाई कीजिए। तो इससे हो क्या रहा है कि जो बच्चे अपना दिन में काम भी कर रहे हैं वो स्कूल में आकर के पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, खास करके लड़कियां ज्यादा आती है हमारे स्कूल में, जो पढ़ाई कर रही है, लेकिन झारखंड, बिहार वगैरह का तो स्कूल का जो स्थिति है आप लोग भी जान ही रही है। विद्यालय है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें टीचर का बहुत अभाव है। अगर बच्चे, जैसे इस ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, वो सोनार अठाड़ी ब्लॉक है देवघर जिला, उस ब्लॉक में एक हाई स्कूल है सोनार अठाड़ी ब्लॉक,
के आसपास मीटिंग, उसमें लगभग 700 बच्चे हैं और 3 टीचर हैं वहाँ, और उसी 3 टीचर से 700 स्कूल बच्चों की पढ़ाई होती है। आप सोच सकते हैं कि कैसे उसकी पढ़ाई, लगभग वही स्थिति सभी स्कूल में है। तो बच्चे स्कूल में जा भी रहे हैं तो सिर्फ हाजिरी के लिए जाते हैं, कि पढ़ाई के मामले में नहीं होता है। तो उनकी रुचि होती है कि हम आपके स्कूल में आकर के पढ़ें, तो वो हमारे स्कूल में आते हैं। हमारे पास जो लड़के लोग हैं वो कमिटेड हैं और अच्छे क्वालिफाइड लड़के हैं, BSc है, कोई MSc है, कोई साधारण BA भी है, लेकिन अच्छा ग्रेड है उसको। तो इस ढंग से हम लोग एक अच्छा एजुकेशन उनको दे पा रहे हैं। और इस बार कुछ मैट्रिक की लड़कियां भी हमारे यहाँ आई थी, जिनको हम लोगों ने निःशुल्क शिक्षा दिया था, बिल्कुल गरीब ट्राइबल परिवार से थी। उन लोगों का रिजल्ट भी अच्छा हुआ है। तो हमारी इच्छा ये है कि उस स्कूल को हम कैसे और मजबूत कर सकें, और इसमें आप सब लोगों का सहयोग अगर मिले, वो एक आदर्श स्कूल हम बनाने के बारे में हमारी राय है कि एक ऐसा स्कूल बनाना जहाँ जिनके पास पैसा नहीं भी है भी, और जो एकदम एक्टिवेटेड परिवार है, उनके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ें और वो पढ़ाई करके आगे कुछ कर सकें। इसके लिए हमको कुछ सपोर्ट की भी जरूरत होती है। उनको कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल देना पड़ता है, कुछ एक बेंच टेबल वगैरह, ये लोग तो हम लोग कुछ इंतजाम किए हैं इधर उधर से मांग करके। बीच बीच में जरूरत पड़ती है, कुछ टीचर हैं उनके लिए कुर्सी की जरूरत होती है। तो ये सारी जो छोटी छोटी समस्याएं, उसको हम लोकल लेवल पे भी हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो सक्षम लोग हैं, वो ज्यादा नहीं तो भाई आप 2 कुर्सी हमको दे दीजिए, 2 कुर्सी दे, आप 5 बेंच हमको बना दीजिए, या 2 विद्यार्थी का पुस्तक हमको चाहिए, उसके लिए कुछ मदद। तो इस ढंग से मदद भी हमको मिल जाता है लोकल लेवल में भी। लेकिन अगर उसको हम थोड़ा सा और बढ़िया व्यापक बनाना चाहें, उसके लिए कैंपेन के द्वारा आप लोग उनको मदद कीजिए, अच्छा स्टोरी बन जाए कुछ अच्छा। उसके लिए हम लोग प्लेटफॉर्म से शेयरों को यूज करते हैं कि हमारे कैंपेन को कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलते रहे। और व्यक्तिगत रूप से अगर हमारा कोई संपर्क में वैसे व्यक्ति हैं जो डोनेट कर सकते हैं, वो शेयरों के माध्यम को डोनेट करें, शेयरों के माध्यम से हमको डायरेक्ट उसी स्कूल को मिल जाए पैसा। तो इस ढंग का कैंपेन चलाने की जरूरत है, मदद करें। थैंक यू दिलीप जी। और हम तो आपके साथ हैं और कमिटमेंट है, और इसीलिए आज हम मिले हैं ये बात करने के लिए, और करते रहेंगे। और जी। मुस्कान और परमेश्वर के पास वो पावर है जिससे वो शेयर करेंगे हाँ। आगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। पूजा, टर्निंग टू यू बिफोर वी क्लोज दिस सेशन ऑन पावर ऑफ गिविंग. I think it's very important to also understand challenges of working with funding avenues. And what are your suggestions for improvement, if any? So I think NGOs are facing a lot of challenges these days. और इन पर्टिकुलर में अगर हम बात करें तो पर्सनली आई थिंक एक जो बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने वो है लिंग्विस्टिक बैरियर. So a lot of NGOs lack English educated staff. So उनका काम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से बेहतर होता है, बट बिकॉज दे डू नॉट हैव समवन जो उनके काम को प्रेजेंट कर सके अच्छे से, दे लैक द अपॉर्चुनिटी, वो नेटवर्क से बाहर हो जाते हैं. So one big challenge is that, and another one is small projects in terms of time. So NGOs look for long-term commitments. Reason being, they need at least 2 to 3 years to show their impact. जब ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं लाइक स्किल डेवलपमेंट या ऐसा कुछ, तो 1 साल का या छोटे प्रोजेक्ट्स आर ओके. बट व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोजेक्ट्स लाइक रिवर रिजुवेनेशन या फिर फॉरेस्ट इम्प्लीमेंट कर, फॉरेस्ट के ऊपर काम करना हो, या फिर बिहेवियर चेंज के ऊपर बात करनी हो, तो इट नीड्स टाइम, कपल ऑफ इयर्स चाहिए होते हैं. तो आई थिंक माय सजेशन वुड बी कि डोनर ऑर्गेनाइजेशन शुड कम अप विद लॉन्गर प्रोजेक्ट depending upon the kind of project it will need. And it will help the organizations to not only to show their impact, but also to become sustainable. Thank you, Pooja. With that, I'm just gonna, I know we have about 32 minutes to go, and I want to make sure I take questions from the audience. I'm going to move quickly to the last section of, the way forward. And what are we looking at? So Sai, I'm going to start with you because I think communities matter. Communities are the change makers. Community structures are key to change.
What do you think is the power that communities hold to create change? Uh, yeah, before answering that question, I liked what Narjis was mentioning. So, why only in crisis? So, I think that should be our tagline. Absolutely, very, very apt and appropriate statement for the moment. Uh, uh, See, as I started out, Sukriti, we at Sharon see a great opportunity to bridge the gap between haves and have-nots. So I think this is the time for New India, where have-nots are doing something for the haves are doing something for the have-nots. And what more is an appropriate, for example, the people who are watching this webinar and all of you, I'm sure all of you have come up that particular curve in your own individual lives. Either in the first generation or second generation, there is a bridge or there is a challenge, a hurdle that all of you have must have come across in sort of creating that social mobility for yourself and creating that status for yourself. So people like Narjis, Parmeshwar, or maybe Muskan, who have got wider outreach and who are ignited minds. Certainly, if these are not the people who can empathize with those have-nots, who else can do actually in this world? So I think the time is for the community to do for the co-community members. And if we were to see the next generation, next to next generation, to be in a fair and equity-oriented and a sustainable world, especially in the backdrop of several goals that we all have set for ourselves in the form of sustainable development goals. I think contributing by one member of the society to the other member is sort of the most necessitating situation in this world. And that way, I think the power of giving can be amplified from especially when somebody is doing for the co-community member, member of the society. And we need not expect something happening somewhere from outside or far off distance. If I can contribute to the society and the community, vulnerable communities around me, I think we can create a great impact. So I think it is time for the making a change by the haves for the have-nots. Indeed, it is time, and I completely agree with you. I think that should be the takeaway. Why only in crisis? So, Narjis, you've really given us the way forward. And with that, I'm going to turn actually to you, Narjis. Despite continued work and what Sai is talking about, equity and really getting there, bridging the gap between have and have nots, the development sphere still faces challenges because of gaps that we have, brought up here on this discussion as well. So, how do you think vulnerable populations really need to be reached out and supported? And aapke experience mein, if there are any examples during the time you've reported, it will be great to hear those. Yes, Sukriti, sorry. First of all, I would like to say that अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा just connect health to education with Dilip ji's case. तो मैं इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाना चाहती हूँ और मैं इसमें थोड़ी चीजें और ऐड करना चाहती हूँ कि not only education, we should focus on social determinants. It mean financial or economic security, education, food security, housing and physical environment, community and social safety, including discrimination. So these all are interconnected. These all, some way or the other way, impact on your mental health, and that ways directly on your physical health. तो मुझको ये लगता है कि अगर आपका एक ब्रॉडर विजन है कि हाउ टू इम्प्रूव हेल्थ केयर सेक्टर और एजुकेशन और लाइवलीहुड और दिस एंड दैट, आपको एक होलिस्टिक व्यू जरूर उसको होलिस्टिकली उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि हर सेगमेंट, हर सेक्टर इज रियली इंटरकनेक्टेड. अगर सपोज किसी के पास अगर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, वो मेंटली डिस्टर्ब होगा,
मेंटली से वो ऑटोमेटिकली फिजिकल जो है वो उसके रिपरकशंस आएंगे। तो मुझे लगता है कि इस पूरे प्रोसेस में हमको हमको ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा फोकस सिर्फ हेल्थ है। उसकी जो अलाइड सेक्टर्स हैं, कम से कम उन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और जो जो भी डोनर है या जो भी फंड आपको कर रहा है, मुझे लगता है कि उनको भी ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ इज, इट डजंट मीन ओनली हेल्थ, उसमें एजुकेशन भी है। अगर हमने एजुकेशन नहीं दिया तो आपको अवेयरनेस कैसे पता चलेगी। जैसे मुझे अभी याद आ रहा है कि कोरोना के टाइम पर जब मैं आर्टिकल्स लिखती थी तो ऑब्वियसली टेलीफोनिक इंटरव्यूज हो पा रहे थे। तो केरल की उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थी, आई थिंक मिस सलूजा थी या शैलजा। तो उनका मुझे बहुत अच्छा इंटरव्यू लगा और उन्होंने ये बताया कि किस तरह हम काफी सारी डिजीजेस को सिर्फ प्रिवेंशन से रोक लेते हैं। और यही सबसे बड़ा रोल है प्राइमरी और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के। लेकिन लोगों में क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, तो वॉशिंग योर हैंड्स, ये सब देखिए कितनी छोटी चीजें हैं जिससे हमने कोरोना को रोका। सोशल डिस्टेंसिंग है, वॉशिंग फ्रीक्वेंट हैंड्स है, आपको कहीं खांसना नहीं है, छींकना नहीं है, थूकना नहीं है, मतलब ये सारा आपके कल्चर में भी है। लेकिन हम सिर्फ उसको ही, हम अगर हेल्थ को ही फोकस करें तो मुझे लगता है वो हम उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। हमको उसके अदर एस्पेक्ट्स को भी फोकस करना होगा, जिसमें एजुकेशन ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब एजुकेशन होगी तो हम अपना जो कैंपेन है, जो हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, वो भी पब्लिक तक, मासेस तक, ग्रास रूट लेवल पे पहुंचा पाएंगे। तो एक तो मुझे ये लगता है कि ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज है कि किसी भी इशू को आप होलिस्टिक तरीके से देखें। उसके एक ही सेक्टर को, एक ही सेगमेंट को अगर आप लेंगे तो मुझे लगता है वो सिचुएशन लगातार बनी रहेगी। थैंक यू नरजिस। एंड आई थिंक सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि शेयर ऑन जो प्लेटफॉर्म है उसकी यूनिकनेस यही है कि किसी एक इशू पे लिमिटेड नहीं है। तो अगर हम देखें हेल्थ, एजुकेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, न्यूट्रिशन, जो भी कैंपेन्स आप प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, वी ट्राई टू कवर एरियाज लाइक यू राइटली सेड नरजिस, होलिस्टिकली. I know the links are up. I will encourage the audience to go visit these links to really support. Dilip ji, Pooja ji have shared examples with you. And before we close the panel and move to audience questions, Parmeshwar, my last question to you, the fourth pillar of the media. Can you talk to me a little bit about really the role media can play in making social impact, and through your journey, any examples of change that we can take away? So, Kriti, honestly, there seems to be a trust deficit in the media these days. Politicians, that's a sad thing. Politicians and journalists are looked at with the same perspective. And this is generically, I'm not saying everyone in the country seems so, but they look at politicians and journalists in a way that they're pushing an agenda. But that's also because of what the audience wants to watch. So my first thing is, and I speak as an audience member, as well as someone who's in front of the camera delivering the news to everyone, I speak from a point where I feel, first of all, you have to have faith in the fact that, yes, the media is supposed to be the fourth pillar of democracy. We are the largest democracy in the world. And as Narjis ma'am put it, we have to look at it holistically. So matters of ranging from housing, social safety, financial safety, to communal harmony, sanitation, physical and mental health, we cover all these ambits. But there has to be a symbiotic relationship between the audience and the media house where people feel they can openly reach out and voice their concerns. Because I seriously believe there's nothing known as voiceless. There are only people who are either deliberately silenced or the people who are unheard. Which is why I really respect the fact that Sharon is covering a huge range of aspects and directly working with people on the ground. It doesn't matter if I'm sitting in a studio and telling you what's happening in Jharkhand, and it doesn't matter if I'm telling you in the studio dressed up in a blazer with a full face of makeup on that people in Uttar Pradesh are getting rats in their rice, in their midday meals, and they're only getting chawal and salt to eat.
I am a medium to tell you what's happening, but I need those inputs from the ground as well. So it would be great, to push this impact further. It would be great if people actually reached out to people who are actively involved in the media. And now there's Twitter, there's Facebook, there's all these Telegram, there's so many ways to reach out people. There's good old letters that you can post to any address of any media house that's based in New Delhi, in Bombay. There's regional media houses, newspapers, radio networks. Because I'm also conscious of the fact that there's a digital divide. Not everyone has the access to an active internet connection or the money to pay for an SMS. Absolutely. So how do we actually get down to the total grassroots? For us to have an in on that, it's very important that people do reach out to us as well. Because we also have limited resources. As you know, it's no secret, depends on if your editor feels like a story gets a certain number of views, they will assign resources accordingly. Because you're also looking at revenue on the other hand. Sure. So there's so many active players going on, but the best way to push this impact is if we directly hear from the ground so we can give you the attention you deserve. Thank you. And that's why I think we are having the conversation today, to make you hear the stories from the ground. Absolutely. And I think we'll stay, of course, in touch with you to keep sharing. Dilip ji ne examples diye hain, Pooja ji ne examples diye hain of really the campaigns that Sharon is utilizing, sharing, power of giving, creating those structures for people to come together. I want to take the next 20 minutes to really take questions from the audience. And thank you so much for being so patient. Thank you for staying with us. Sai, I'm going to start with you. There's a question for you, that you talk about the power of communities. But do you think we also need structural changes to support who are vulnerable? And how viable is it depending on kindness of people? How viable? How viable? Should we only depend on kindness of people? And do we really need structural changes to support who are vulnerable beyond power of communities? Okay. So, frankly speaking, this has been our Sharon's structure also. If you look at it, it is a group of not-for-profits coming together and have set up this particular platform. So we strongly believe that the problem, the challenge is so big. No individual, not a government, not corporate sector, nobody individually can address this. So it is all the stakeholders who should come together and make these things very much possible. Now, the kindness is very important because we as citizens or as co-members of the society do need to see other members coming up and sort of be fetching their livelihoods decently. But that is not sufficient. So kindness should be there, and also we need structural changes. In fact, in the last maybe in the last 10-15 years or maybe 7 years or so, I have not seen so many changes in the regulatory mechanism in the country that maybe last 20-30 years the country hasn't seen. While on one front they are for the good, while on the other front they are a bit of challenges for the civil society organizations. But if we were to see stay the face of the tiger, frankly, it's a big challenge that we all have. So it's so big that no individuals, not any sort of kindness of a few thousands or lakhs of people would be sufficient, frankly. When government to the tune of our country and the corporate sector where we have in this country who are so the richest people in the world cannot make things happen, no single effort or a set of category can really support. We need all the changes. We need all kinds of supports. We need structural changes in the way the vulnerable communities are being sort of integrated or included into the mainstream development of the growth of the economy. And certainly we also need focus by the people who have got kindness in their heart. And frankly speaking, with so many out there, the world has become so dynamic. And gone are the days we should have
no, we'll have a big program and this program Hmm. will cater to so and so people. So it's quite dynamic these days with social media, and also issues keep on coming, and whoever is sort of has the capacity to sort of serve that and bring those vulnerable communities out of their despair, I think people should keep on doing such good things. So no single solution, frankly. But the takeaway on the Saturday afternoon is kindness is important. And I'm reiterating the links to the platform are in the chat box. We will be sending everybody who's on this conversation with us emails with details. Please be kind, please be thoughtful, come forward, and I think together we can do this. Linking kindness to crisis. Narjis, there's a question for you. Really impactful thought around the issue of crisis and why should we only come forward in crisis. But the question is that how do we then actually encourage people to donate without a crisis? Because usually people want to donate when they realize they're helping someone who is in crisis. Narjis, any thoughts? What do you think? मुझे लगता है सुकृति, मीडिया का एक रोल सबसे बड़ा ये भी है कि वो सेंसिटाइज करे लोगों को अपनी स्टोरी टेलिंग एबिलिटी से, और जो ग्रास रूट इश्यूज हैं उनको जेन्युइनली हाईलाइट करके। लेकिन मुझको ये लगता है कि पिछले कुछ टाइम से मीडिया में डेवलपमेंट इश्यूज का स्पेस कम हुआ है, और जहाँ तक हेल्थ की बात की जाए तो पेंडेमिक में तो उसको काफी स्पेस मिला है, पूरा पेपर ही हेल्थ का होता था। लेकिन आप देखिए कि किस तरह लोगों ने उसको बिल्कुल भूल गई हैं उस क्राइसिस को, उस सारी जो भी बहुत खराब मेमोरीज थी उन सबको लोग भूल गए हैं। और अब आप वही पेपर्स को देख लीजिए, वही आप चैनल्स को देख लीजिए कि कोई स्टोरी, कोई डॉक्यूमेंट्री या उस तरह की चीजें प्लेटफॉर्म पे अब तभी आएंगी जब फिर कोई इतना बड़ा क्राइसिस होगा। वो फ्रंट पेज पे भी तभी आएंगी, वो बड़ी न्यूज भी तभी बनेंगी। मीडिया का भी मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा सेंसिटिव उसको और होना चाहिए, लोगों को सेंसिटाइज भी और करना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि कैसे लोगों को जनरल डेज में आप इनकरेज करेंगी, यही सवाल है ना सुप्रीति? बिल्कुल यही सवाल है कि काइंडनेस हमेशा क्राइसिस में क्यों निकल के आती है। तो आई थिंक आपका जो आज का तो मैसेज मुझे है नरजिस मुझे लगता है कि ये तो जिन्होंने सवाल पूछा है वो खुद भी अपने आप से पूछें कि ये वो क्या वो ये जस्टिफाई कर पाएंगे कि ये ऐसा क्यों है। अगर उनके साथ है तो वो ऑब्वियसली और लोगों के साथ भी है, क्योंकि वो भी इसी समाज का, इसी सोसाइटी का एक पार्ट है। बिल्कुल। तो वो अगर ये सोच रहे हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं तो मैं उनको एज सच एक्यूरेट कोई जवाब तो नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि ये कोई मैजिक स्टिक नहीं है कि मैं एकदम आपको काइंड कर दूं और एकदम आपको इनकरेज करूं कि आप चैरिटी करिए। जी। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करती हैं, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पूरे साल काम करती हैं, जिन्होंने जैसे सपोज आप बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को लीजिए, वो पूरे साल काम करते हैं इन इश्यूज पर। और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, वो पूरे साल काम कर रहे हैं अपनी अपनी कंट्री के साथ। वो दुनिया के तमाम कंट्रीज के लिए काम कर रहे हैं। उनको उस कास्ट से, रिलीजन से, रेस से उनको कोई बैरियर नहीं है, वो किसी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन वो काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप जो भी ये सवाल पूछ रहा है उनको उनको इस दुनिया में ऐसे लोगों को भी देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और ये इंफॉर्मेशन, ये अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए, जस्ट टू इनकरेज ईच अदर। जरूरी नहीं है कि हर इंसान डोनेट करने के लिए, फंड करने के लिए, मदद करने के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स ही हो। मैं ऐसा नहीं मानती। मुझे लगता है कि आप इंडिविजुअल लेवल पे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। 1 रुपए से भी लोग मदद करते हैं। बहुत सारी बिल्कुल। कैंपेन्स इंडिया में ऐसी हैं जो सिर्फ 1 रुपए डोनेट करके लाखों और करोड़ों बनता है। और इनफैक्ट मुस्कान ने भी अभी ये बताया था
कि उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया था। तो वो थोड़ी थोड़ी हेल्प की बात की जाए। फंड का मतलब ये मत सोचिए कि सडनली आपको करोड़ों मिल जाएगा और आप सडनली चेंज कर देंगे, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन छोटी मदद, स्मॉल स्टेप्स क्रिएट्स बिग रिजल्ट्स गिव्स। Another important takeaway: small steps create big results. Thank you, Narjis. On that line, दिलीप जी, आपके लिए एक सवाल है। पहले तो हमारे ऑडियंस कह रहे हैं कि आपका काम बहुत ही सराहनीय है। आपके साथ जुड़े लोगों को क्या शेयरऑन प्लेटफॉर्म के बारे में कितनी जानकारी है? पहला सवाल ये है। और दूसरा ये है कि क्राउड फंडिंग के अलावा आपके पास फाइनेंसिंग के और क्या माध्यम है? आपने बताया FCRA, अभी जो एनवायरनमेंट है उसमें काफी मुश्किल भी हो रही है, तो यही ऑडियंस आपसे जानना चाहते हैं दिलीप जी। जी, एक तो पहला है कि शेयरऑन को हमारे जो इष्ट मित्र लोग हैं वो लोग सब जानते हैं, उनको साथ में हमने शेयर किया है शेयरऑन के बारे में, उनको एक अच्छी समझ भी बनी है और उसी समझ के आधार पर कुछ छोटा मोटा डोनेशन से मिल पाई है। दूसरा है कि हमारे पास फंडिंग की अपॉर्चुनिटी उस ढंग का नहीं है जितना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कुछ CSR फंडिंग भी कर रहे हैं। ITC के साथ में है, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के साथ में है, HDFC के साथ में भी है। लेकिन उनका जो एक होता है कि एक एरिया उनका आइडेंटिफाई होता है कि हम लाइवलीहुड के क्षेत्र में करेंगे, हम इरिगेशन के क्षेत्र में करेंगे, हम एग्रीकल्चर के सेक्टर में करेंगे, तो वो सेक्टर में कर रहे हैं। दूसरा इनका प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट होता है। अगर एक तो है कि स्टेट प्रायोरिटी करते हैं कि हमारा झारखंड प्रायोरिटी में है, अगर झारखंड प्रायोरिटी में है तो उनका है कि हम जो मोस्ट वनरेबल डिस्ट्रिक्ट है या फिर अल्ट्रा पुअर जहाँ ज्यादा है या पीवीटी परिवार जहाँ ज्यादा है वहाँ हम काम करेंगे। तो इस ढंग का एक प्रायोरिटी होता है डोनर का भी, तो उस हिसाब से हमारे डोनर जहाँ हम करना चाहते हैं वहाँ फिट नहीं हो सकते। अभी रिसेंटली एक दो से बात भी हुई तो वो पाकुर साहबगंज जहाँ की पीवीटीज के परिवार ज्यादा रहते हैं, अल्ट्रा पुअर ज्यादा है, वहाँ उसके लाइवलीहुड के लिए काम करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ हमको सपोर्ट करना चाहते हैं और आगे बात भी होगी। इन जिस एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं, जहाँ कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि देवघर में हमारा ऑफिस है, देवघर में एयरपोर्ट हो गया, एम्स हो गया, तो ये बहुत बड़ा जगह हो गया, इसका ग्रोथ बहुत हो गया। लेकिन भीतर में जाकर के देखिए क्या सिचुएशन है, और हम उसके लिए स्कूल चला रहे हैं, वहाँ हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए डोनेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो जो हमारे शेयरऑन के माध्यम से ही हमको उसमें डोनेशन की ज्यादा संभावनाएं दिखी, क्योंकि वो उसमें छोटे छोटे डोनर होते हैं तो स्कूल के लिए डोनेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें बड़ा फंडिंग ही चाहिए। अगर 100 आदमी 5-5 हजार रुपया भी दे दे तो एक बड़ा फंड हो सकता है और उस फंड से हम 1 साल तक स्कूल को आराम से खींच सकते हैं। तो बड़ा फंडिंग की भी हमकी लालसा नहीं है, हमारा स्कूल चले, बस उसी स्कूल को चलाने के लिए जो अगर लाख रुपया 50,000 रुपया अगर मिल जाता है तो हमारा 6 महीना का खर्चा निकल जाएगा, उससे चल सकता है। और उससे बड़ा का अगर हम प्लानिंग करेंगे, देखेंगे, तो फिर उसके लिए हम गवर्नमेंट के पास नहीं जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम प्रयास नहीं कर रहे हैं या हमारे पास फंडिंग एजेंसी नहीं है, ऐसा नहीं है। हम फंडिंग के साथ भी काम करते हैं, CSR के भी साथ करते हैं, गवर्नमेंट के साथ में भी काम कर रहे हैं, कुछ व्यक्तिगत डोनर के साथ में। लेकिन जो हम करना चाह रहे हैं, जहाँ हम करना चाह रहे हैं, वहाँ के लिए थोड़ा सा फंड का एक चैलेंजेस आ रहा है। तो उस चैलेंजेस को दूर करने के लिए, उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए उसको दूर करने के लिए हम शेयरऑन जैसे प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं। कुछ हमको सपोर्ट भी मिला, इससे नहीं मिला ऐसी बात नहीं है। इसको और हम कैसे इससे हमको कुछ प्राप्त हो जाए। अब बहुत बड़ा डोनर को जरूरत भी नहीं है, थोड़ा बहुत भी अगर 1,50,000, 5 लाख, 2 लाख रुपया भी अगर आ जाता है तो हमारा साल भर का खर्चा इसका आराम से चल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी, और मैं आशा करती हूँ कि आज के कॉन्वर्सेशन के बाद जो कैंपेन है उसमें लोग डोनेट करें, और हमारा यही अटेम्प्ट रहेगा कि शेयरऑन को हम आगे बढ़ाएं। आपने सही कहा कि हमेशा बहुत बड़ी डोनेशन की ज़रूरत नहीं होती, और इसीलिए आज हम ये बात कर रहे हैं कि एक एक से बढ़ बढ़ के अगर 50 लोग भी करें कंट्रीब्यूट, तो उससे कितनी
लाइव्स बदल सकती हैं। थोड़ा सा मैं पॉइंट से हटती हूँ, 10 मिनट है हमारे पास। परमेश्वर, द ऑडियंस हैव लेफ्ट अ क्वेश्चन फॉर यू रिगार्डिंग द डिजिटल डिवाइड, which they say is a very good point. So how do you think people who don't realize there is a challenge or have access to resources be supported? And how can media really play a role to build awareness around these platforms and opportunities? Honestly, I think it boils down to the fact that you have to look at the number of media options available. When you look at media, it's not just social media, it's not just TV, it's also radio, it's also things like pamphlet, anything that's actually educating you. So even if you actually get out and talk to people, if you notice, word of mouth has such a strong impact. So it's about talking, it's about making yourself aware, it's about the way I look at it. I'll let you in on one little thing that I do. Every day I tell myself I need to learn one new thing about a place that I haven't ever been to and about their people. So that's actually two things, but start like that and start from your own country, beyond your own cities. I belong to a place called Kapurthala in Punjab. The people in the city consider it a barn. But that also gives me the perspective of back home, where things like electricity, water are sparse. In the city, it's a luxury to have electricity round the clock. Back home, you get electricity for 4 hours, you consider yourself lucky. But you have to talk about these things. You have to voice your concerns in order for these concerns to then be amplified and then eventually reach a platform where someone takes cognizance and acts upon this. And as far as the digital divide is concerned, honestly, I think it's a bit utopic to think of the fact that everyone in this country should be adept at circumventing the internet and browsing the internet. But it's going to take a while till we get there. So up until we do, even the people who don't have access to a device with Wi-Fi and internet connectivity, talk to them, speak to them about things like basic hygiene and sanitation. It could start with things like using bleach in your toilet every 3 days because it could reduce the germs. Tell them, why does it impact them? Even now, little things like masks have stopped. Now, not many people are wearing masks because they think COVID has ended. But you have to tell them why you actually wore that mask. It cut the transmission of the virus. So these are active conversations we need to keep having, whether or not something is still in the news or something is still trending. Or something is a crisis. Right, Thanks so much. absolutely. Thank you so much, Sukriti. Thanks. Pooja, one question to you. Actually, I want to ask this to you. You talked about the linguistic barriers, you talked about the challenge of staff not knowing English, but most of the applications out there are in English. They are highly demanding. So how do we break these barriers? What can we do? I think if the organizations are provided with the continuous support and continuous funding, this barrier can be breached, because who doesn't want a good team, right? Yeah. Koi chahta hai. So they do have a dedicated team, but the point is they don't have an educated staff. So yes, definitely, if they are supported with the continuous funding, this barrier can be reached. I have time for 2 more questions. I want Sai to close us out, but before that, Narjis, I think there's a question around mental health. You talked about mental health and how, very often change is not visible. So do you think Sharon can be a platform to address that also as an issue? जी सुकृति, मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ और इनफैक्ट अभी जो रिसेंट पेंडेमिक गया है और उसके बाद मेंटल हेल्थ, मुझे लग रहा है कि दूसरा एपिडेमिक कभी मेंटल हेल्थ का ही ना हो, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी कुछ साल पहले ऑफिशियल सोर्सेज ने ये चीज़ कही थी। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, ये वाइस प्रेसिडेंट के किसी एक स्पीच में ये बताया गया है और ये पॉसिबिलिटी बताई गई है कि इंडिया में एवरी 4 अमंग 5 आई थिंक, और अभी पेंडेमिक के बाद तो हाउसवाइफ्स को अगर आप लीजिए, होम मेकर्स को लीजिए, इनफैक्ट एडोलेसेंट और छोटे बच्चे,
उनको भी, उन तक भी एंजाइटी, स्ट्रेस और इंसोम्निया बहुत जी रैम्पेंट है, अब बहुत ज्यादा हो गया है। ये जो सवाल किया है, इनको मैं ये जरूर एड्रेस करना चाहूंगी कि मेंटल हेल्थ एक ऐसा इशू है और जिसकी वजह से वो हमेशा निग्लेक्टेड एरिया रहा है, उस पर काम नहीं हुआ है, उसको एड्रेस नहीं किया गया है और उसके साथ इस तरह हमने जस्टिस भी नहीं किया है। बिकॉज उसमें हमें कहीं चोट नहीं दिखती, उसमें हमें कहीं इन्फ्लेमेशन नहीं दिखता, उसमें कहीं हमें ब्लीडिंग नहीं दिखती है। तो हमको लगता ही नहीं है कि किसी इंसान को कितनी तरह की डिफिकल्टीज हो रही है, कितनी तरह की परेशानियां आ रही है, until unless it is visible to everyone। तो मुझे लगता है इस तरह की चीजों को तो सबसे पहले एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि आप अगर मेंटली फिट है ना, तो आप फिजिकली भी फिट होंगे। जी आपका ब्रेन आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। और अगर ये इतनी छोटी सी साइंस है, बहुत छोटी सी साइंस है, अगर ये सब समझ लें कि अगर हम सेटिस्फाइड रहेंगे, अगर हम मेंटली फिट रहेंगे, तो हम फिजिकली भी फिट रहेंगे। और ज्यादातर बीमारियों में अगर कोई बहुत ही लेमन की तरह अगर मैं इसको समझाना चाहूँ, तो मैं ये भी बताऊं आपको कि बहुत सारी बीमारियों में, सर्जरीज में, डॉक्टर हमेशा पेशेंट को, इवन फिल्मों में भी ये कहते हुए सुना जाता है कि अब दवा का काम खत्म हो गया है, आप दुआ करिए, या आप, मरीज तभी फिट हो सकता है, तभी वो रिकवर कर सकता है जब वो खुद फिट होना चाहे, जब वो, उसके अंदर खुद इतनी विल पावर हो, जब वो मेंटली उसको उसको एज अ बैटल ले। तो दिमाग, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, जी तो अगर दिमाग ठीक रहेगा तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। तो मुझे लगता है कि आई एम सो सॉरी, एक बार मुझे सवाल प्लीज रिपीट करिए सुकृति। How do you think Sharon as a platform can work towards better mental health of people? जी, मुझे लगता है कि शेरॉन को ये करना चाहिए, और अगर अब तक Hmm. नहीं किया है तो अब प्लीज उनको ये इनिशिएटिव जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले कि फिर इसका कोई क्राइसिस आए, तो इसको अभी ही एड्रेस करना चाहिए। और इसके लिए फोरसाइटेडनेस भी होनी बहुत जरूरी है, जो कि इस प्लेटफॉर्म में मुझे लग रहा है जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, वो कम से कम इस इशू को सीरियस लेना शुरू कर दें। और प्रिवेंशन की भी इसमें बात है, इसमें काउंसलिंग की बात है। मेडिसिन तो बहुत बात की बात हो जाती है, Hmm. लेकिन कम्युनिकेशन, जी बातचीत, जो मुझे लगता है कि अभी जो सिनेरियो है, अभी जो इन्वायरमेंट है, इसमें भी मैं होलिस्टिक इशू को, प्रॉब्लम को, रीजंस को देखने की बात करूंगी। हमारी शेयरिंग सुकृति पिछले कुछ सालों से, कुछ डेकेड से बहुत अब कम होती जा रही है। बहुत ही सिलेक्टिव शेयरिंग हो गई है हमारी, और कभी कभी तो वो भी अब नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो मेंटल हेल्थ को भी डेवलप कर रहा है। और नॉट इवन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, ये रूरल एरिया में भी लोगों को स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि वहाँ रीजन कुछ और हैं, बिल्कुल यहाँ रीजंस कुछ और हैं। तो वहाँ हो, और ये क्लाइमेट चेंज से भी कनेक्टेड है ये इशू, ये वायलेंस से भी कनेक्टेड है, और ये आपकी एम्प्लॉयमेंट से भी है, आपकी एजुकेशन से भी है, हर चीज से ये कनेक्टेड है। तो मुझे लगता है अगर शेरोन ने इस तरफ बहुत अभी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है, तो उसको ये जरूर लेना चाहिए। डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे आपको पेशेंट मिलेंगे जो, जिनको ये, और सुकृति इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मेंटल हेल्थ के पेशेंट को पता भी नहीं चलता है कि वो पेशेंट कब हो गया। हम्म क्योंकि हम लोगों को अब इतना, स्पेशली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, कि हम लोगों को स्ट्रेस की, एंजाइटी की इतनी आदत हो गई है ना, कि हमको लगता ही नहीं है कि ये कोई इशू है हमारे लिए। जी Thank you, Nargis. We've reached our end of the webinar, but Sai, I'd like you to close us out with a call to action for the audience that's been so patient, and then we can close the session. Over to you. Sure. Thank you very much. I would like to share with the audience that Sharon has been sort of facilitating more than 20 plus social enterprise setup and working with partners in more than more than 80 partners. Civil society partners are associated with us in more than 18 states in India. And we have raised about 51 odd crore rupees for different partners across the country, and catering to the requirements of different vulnerable communities.
And we believe the change starts here. And I'll call upon all the stakeholders in this particular webinar and also out there in the society to be the change and do exhibit your kindness, and please do contribute, join hands with us and do contribute to the this society where you are living in, and also support several vulnerable communities through our partners. So we are a very good set of credible partners spread across the country. And we are, as Sharon, we are connecting all the platforms, and we are a network of partners. And it would be great if you can contribute your money, certainly. And if not money, money is not all. And you can certainly also contribute through our platform, through your volunteering exercise as well, for the betterment of the vulnerable communities in the country. Thank you very much. Thank you, Sai. And with that, thank you, everybody. I just want to say I'm so glad it's Saturday afternoon. It's a weekend, but the fact that we had the attendance we did shows that people want to be the change, as Sai has said. And with that, a takeaway. Dilip ji, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए. And thank you, everyone, and have a good weekend. Thank you. Namaste. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you, Sukriti. Sukriti.